like them. Hey guys, welcome back to my channel. Today I'm going to review these 4 eyeliners. Let me show it to you properly. These are the 4 eyeliners. We are going to swatch them. We are going to put them on certain tests and rate them accordingly. And at the end, I will give you my review on them. Guys, इसको already part 1 मैंने करके रखा हुआ है. I'll link it here. It was liquid liners under 200 rupees. वहाँ पे मैंने price criteria 200 रखा था. यहाँ पे मैंने price criteria नहीं रखा है. But these all are kind of waterproof liners. Like the company claims them to be waterproof. So let's see कि कौन कितना अच्छा है, कौन कितना पानी में है. If you are interested in knowing how these liners perform, then please continue watching. But before that, don't forget to subscribe to the channel. Hit the bell icon so that you get notifications. You can also follow me on Instagram. Now let's get into the video. The first liner we have is this Maybelline the Colossal Bold Liner. So बुझ गया, it is an old one. This thing retails for 249 rupees for 3 ml of the product, and the company claims it to be a waterproof liner, and also the company claims that this is going to last for 24 hours. मैंने यहाँ पे कोई भी liner 24 hour wear नहीं किया है guys. I cannot wear a makeup for 24 hours. So this is what the packaging looks like. This is quite similar to the Colossal Kajal. The second liner I have is this Cuffs and Lashes by Nidhi Katiyar ka waterproof liner. This is in the shade Pitch Black. This is available in 8 different shades, matte as well as shimmer or glitter eyeliners. This retails for 199 rupees for 9 ml of the product. The company claims this to be waterproof and smudge proof. हम उसका टेस्ट कर लेंगे. The next eyeliner we have is this Essence Super Last eyeliner. This is the waterproof version. The company claims it to be 18 hour long lasting. This retails for 295 rupees for 3.5 ml of the product. The last liner we have is this Sugar I Want So double matte eyeliner. So this is in the shade 01 Black Swan, and this is available in 4 different shades. This is a little bit costlier than the liners that we have. This retails for 699 rupees for 1.7 ml of the product. तो ये काफी costly है. And the company claims it to be 17 plus hours long lasting, but they don't claim it to be a waterproof liner, but they say that this is a water resistant liner. Now let's swatch them one by one. Let's swatch the Maybelline liner first. This is what the brush looks like. This is a very thin applicator, but this is a brush applicator. Like ये brush है लेकिन काफी thin है. This is one single swipe of the Maybelline Colossal liner. Guys, I'm going to keep the order same. पहला मैंने Maybelline swatch किया. Second, I'm going to swatch the Cuffs and Lashes one. इसका भी brush tip applicator ही है, and इसका brush Maybelline वाले से भी thin है. This is what the brush looks like, and this is the swatch of it. Next, I'm going to swatch the Essence one. Essence वाले का brush tip applicator नहीं है. It's a felt tip applicator, guys. This looks like a brush tip applicator, but it's a felt tip applicator, and it is very, very, very soft, you guys. So this is one single swipe of the Essence liner. Next, let me swatch the Sugar liner. This is what the wand of it looks like. This is a straight up felt tip applicator. और felt tip applicator यानी वो applicator जो आपके sketch liners में होते हैं. So this is what the Sugar one looks like. So these are the 4 liners swatched side by side. Now I'm going to let them dry for 5 minutes, and then हम उसको smudge करके देखते हैं and देखते हैं कि कौन कितना smudge proof है. This is what they look like when they are completely dry. And guys, सबके सब बहुत quickly drying है. So कोई भी ऐसा नहीं है जिसको बहुत time लगा dry होने को. Now let me try to smudge them. Let me try smudging the Maybelline one first. So guys, I'm putting a lot of pressure. Okay, a little bit, a very, very little bit came off from this side, if you can see. Okay, let me try smudging the Cuffs and Lashes one. Okay, it did fade a little bit, if you can see. Guys, I'm putting a lot of pressure. No one is going to put this much pressure on their eyelid.
Okay, let's smudge the Essence one. ये भी थोड़ा सा एकदम, ये बहुत कम अपना कलर चेंज किया है, स्लाइटली लाइट हुआ है, बट इट डिड नॉट बज फ्रॉम इट्स प्लेस। वेयरएज जो कर्व्स एंड लैशेस वाला है और जो मेबलिन वाला है, ये दोनों थोड़े से निकल गए, वेयरएज द एसेंस वन डिड नॉट बज। लेट्स गो फॉर द शुगर वन। Even this faded a little bit because I did put a lot of pressure. So yes, that's what they look like when I smudged them very harshly. Okay, let me swatch them again and we will do the waterproof test. Okay guys, I just swatched them again and they are completely dry now. I'm going to split some water on them. ये छोटा सा मेरे पास स्प्रे बॉटल है, कोई तो टोनर आया था, मैंने पानी भर के रखा है इसमें. So I'm going to split some water on them. So I can say all four of them are water resistant. Like, I'll show you a live them. So if you observe, the sugar one slightly melted. I don't know the camera is capturing it or not, but yes, the sugar वाला थोड़ा सा निकल गया because guys they don't claim the liner to be a waterproof one, but बाकी तीन तो waterproof claim किया है. Let me try to smudge them now. Let me try to smudge I'm going to smudge it with a very light hand now. This is the Maybelline one. So it did budge. If you observe guys, मैंने बहुत lightly smudge किया. I did not put pressure at all. बहुत lightly smudge किया and it moved. Let me smudge the Cuffs and Lashes one now. It did move a little bit, not more but a little bit. Now let me smudge the Essence one. Even this moved. Now it's time for sugar one and I know this is going to move because they don't claim it to be waterproof one. Okay, अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो शुगर वाला बहुत बुरी तरीके से स्मज हुआ, बाकी तीन है ना थोड़े से निकल गए but they did not smudge like crazy, whereas the sugar one smudged very badly because guys they don't claim it to be a waterproof one. Okay guys, now let me give you my review on them. सबसे पहले हम बात करते हैं Maybelline वाला Colossal Bold Liner. ये बहुत अच्छा लाइनर है. लाइक दिस इज क्वाइट मैट. अगर आप नोटिस करते हो तो काफ़ी हद तक मैट लाइनर है एंड उसके साथ साथ ये काफ़ी हद तक लॉन्ग लास्टिंग भी है. इसका ब्रश मुझे बहुत पसंद है. इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, तो आप इससे एकदम थिनेस्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हो और आप इससे एकदम थिकेस्ट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो. दिस इज रियली अ वेरी गुड लाइनर फॉर द प्राइस यू आर पेइंग. 250 रुपीज़ में आपको ये लाइनर मिल रहा है एंड मेबलिन एक ऐसा ब्रांड है जिसपे आपको हमेशा कोई ना कोई ऑफर मिलेगा. सो फॉर द प्राइस and its performance, this is bang on guys. I really like this liner. This liner lasts for around 11 to 12 hours on your eyes guys. लेकिन ऑब्वियसली मेरा इनर कॉर्नर से मेरा लाइनर निकल जाता है. कोई भी लाइनर लगा दूँ वो इनर कॉर्नर से निकलता ही है, तो ये भी निकलता है. तो इफ आई हैव टू रेट दिस, आई विल डेफिनेटली रेट इट अ 9 out of 10 बिकॉज ये थोड़ा सा स्मज हुआ था एंड ये 100% वाटरप्रूफ नहीं है. Okay, the next liner we have is this Cuffs and Lashes by Nidhi Katiyar. This is a beautiful liner, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है. They claim it to be a matte liner, but I cannot call this as a matte liner. अगर आपने Stay Cookie का लाइनर यूज़ किया रहेगा ना, इसका कंसिस्टेंसी एग्जैक्टली Stay Cookie जैसा ही है. लाइक थोड़ा सा शाइनी है, but this is not completely matte. So this is quite waterproof and this is quite long lasting as well guys. Like this lasts for a good again 11 to 12 hours on your eyes. Again ये भी थोड़ा सा इनर कॉर्नर से निकला, बट ये Maybelline वाला ज़्यादा निकला था मेरा इनर कॉर्नर से कंपेयर टू दिस वॉज इन प्लेस. आई रियली लाइक इट गाइज. इसका ना ये जो what do you call it as, ये जो भी है पेपर पर्ची सॉर्ट ऑफ थिंग, इसमें आपका इंग्रेडिएंट लिस्ट से लेके मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेके सब कुछ लिखा हुआ है. आई रियली अप्रिशिएट दिस वर्क. सो इफ आई हैव टू रेट इट, आई विल रेट इट अ 9 on 10 बिकॉज दिस इज नॉट द मैट आईलाइनर दैट आई वॉज लुकिंग फॉर. ये थोड़ा सा ग्लॉस है, थोड़ा सा शीन है इसमें, सो इसलिए आई एम रेटिंग इट अ 9 on 10. बट अदरवाइज दिस इज रियली अ वेरी गुड लाइनर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस गाइस. मैंने ये इस वीडियो में डिटेल में
मैंने बात किया है इसके बारे में. This is quite water resistant, this is quite smudge proof. This is one of my favorite liners guys. This is matte. This did not leave from the inner corner very easily. इसको ये बहुत देर तक वैसे ही था जैसा मैंने लगाया था. बहुत देर के बाद लाइक आफ्टर 5 to 6 आवर्स वो थोड़ा सा इनर कॉर्नर से निकला था. सबसे पहले तो इसका ब्रश, ओ माई गॉड, आई लव द ब्रश ऑफ इट. इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एंड इट गिव्स यू दैट फेल्ट टिप वाला स्टिफनेस, बट इट इज़ फ्लेक्सिबल. आई नो आई एम ब्लैबरिंग, बट दैट्स वॉट इट इज़. So if I have to rate it, I'll rate it a 10 on 10. This is a perfect liner. If you are planning to buy a liner and you want something which is long lasting, matte, you will love this. Do give this a go if you are planning to get an eyeliner. This one is perfect. Lastly, we have this Sugar I Want So eyeliner. First of all, this is very costly. ओके, सेकेंड थिंग, मैंने मेरे लाइफ में इतना मैट आईलाइनर कभी नहीं देखा है. दिस इज मैट लाइक अपना जो जेल लाइनर जैसा मैट होता है वैसा मैट है. बट सैडली आई डोंट लाइक इट्स फेल्ट टिप एप्लीकेटर. लाइक ये काफ़ी स्टिफ है. लाइक आई विल शो यू. सी, ये काफ़ी स्टिफ है तो आईलाइनर ड्रॉ करते वक्त थोड़ा सा तकलीफ देता है. इफ़ आई हैव टू रेट इट, आई विल रेट इट अ 7 out of 10. Because if I'm paying $6.99 for an eyeliner, I want it to be a waterproof one. Secondly, you just get 1.7 ml for $6.99. The quantity is also very less. I don't like the applicator, but liner बहुत बढ़िया है. It lasts very long. Like it lasts for good 7 to 8 hours. After 8 hours, ये भी मेरा inner corner से निकला ही था. So I don't feel like splurging $6.99 for this. I'll definitely prefer this over this. मैं दोनों को बाजू बाजू में आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ. You decide which one you want. Like I agree, Sugar one is much more matte than this Essence one, but guys, you are paying more. Okay, this is what both the liners look like. Like ये ऊपर वाला Sugar वाला है, नीचे वाला Essence वाला. Can you make out any difference? They both are matte. They look exactly identical guys, but Sugar is an Indian brand. It is cruelty free. Essence is not an Indian brand and I'm not sure whether it is cruelty free or not because इसमें कुछ भी specified नहीं है. So if you are someone who only uses Indian brand, you can go ahead and purchase it. But ये लिटरली इसका हाफ प्राइस है एंड आई विल डेफिनेटली प्रिफर दिस. सो आउट ऑफ दिस 4, इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनी वन आउट ऑफ दिस 4, आई वुड हाईली सजेस्ट द एसेंस वन. दिस थिंग हैव माई हार्ट गाइज. लाइक बहुत बढ़िया लाइनर है फॉर द प्राइस यू आर पेइंग. सो येस, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. इफ यू फाउंड इट हेल्पफुल, देन डू गिव दिस वीडियो अ बिग thumbs up. You can also follow me on Instagram. I'll see you guys very soon. Until then, bye.